Hello everybody. So today we are going to be talking about ear piercings. This is your very own ENT surgeon Dr. Saloni Mehta. हम ear piercing के बारे में क्या बात करेंगे? So we are going to be talking about ear piercing कैसे करानी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप ear piercing करा सकते हो अपने कान में, and post ear piercing care. पहली चीज़, आप अपने कान में कहीं पे भी ईयर पियर्सिंग एनी प्लेस नहीं करा सकते. कहाँ पे कराना चाहिए? जहाँ पे भी स्किन वाला पार्ट दिख रहा है, मोस्टली टिल हियर इन माई ईयर, यहाँ तक स्किन है. इट इज़ सेफ फॉर मी टू गेट ईयर पियर्सिंग डन इन दिस एरिया. Now some of you will tell me, ma'am, I've got my ear piercing done here or ear piercing done maybe on the tragus. कुछ नहीं हुआ. I would say you were lucky enough. इस बार नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ हो जाए. क्या हो जाए, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन आवर सब्सिक्वेंट वीडियोस. सेकेंड, यू शुड गेट योर ईयर पियर्स्ड ओनली बाय एन ENT सर्जन. वाई? बिकॉज सैनिटी इज टू बी मेंटेन, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी यूज्ड. हर बार इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड जो ईयर पियर्स स्टड्स यूज़ किए जाते हैं, दो शुड ऑल्सो बी स्टेरलाइज्ड. सो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पस इन योर ईयर. यही एक केस है, अ वेरी यंग फीमेल हु केम टू मी, हु गॉट हर ईयर पियर्स्ड बाय नॉर्मल ईयर पियर्सिंग गाय, एंड फॉर 21 days she didn't do anything about it. She was in utmost pain. एंड नेक्स्ट हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे.